Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Please sit together, have adab, manners for the gathering of dhikr. MashaAllah, in this gathering of dhikr, there are so many angels that the whole space between the sky and the earth is filled. So sit together, close together, have respect for the masjid. He who has respect, he gets a lot. But he who has no respect, he loses a lot. So listen to the method of dhikr. MashaAllah, all of you, lots of you are Naqshbandi, but there are lots of new people, so listen. In the Naqshbandi order, the dhikr is silent dhikr, muraqabah, silent dhikr in the heart. We don't do loud dhikr. In the Naqshbandi teaching, there's no loud dhikr. So all of the levels the student attains through silent dhikr in the heart. So what we're going to do now, we're going to do loud dhikr, which is Khatam Khwaj Gan. So first what we're going to do is, we're going to request Allah Ta'ala to repay the favor of our pious predecessors. You should always repay the favor with a favor that due to our pious predecessors who came to the world and taught us deen, they taught us the name of Allah, they were taught, and until today, this era, this generation, the names of Allah, the teaching of Allah arrived. So it's fard on us, compulsory on us that we should recite and do dua for them and ask Allah to give the reward to them so that their affairs and their blessings we can get more from remembering Allah. So this is the methodology of the Naqshbandi order, that first we do Ithal Thawab, we ask Allah to convey the rewards of what we're going to recite to our pious predecessors, which starts from Hazrat Abu Bakr Siddiq all the way down to my Shaykh, all the pious elders. So the select kalamat that I will recite, that you will repeat, these aren't from today, but from the history of Islam. The pious elders have selected these special du'as and kalamat, that each kalama dua is recited. For example, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. This verse will recite, and we will ask Allah to give the reward to the Shaykh of Shaykhs, Hazrat Abdul Qadir Jalani Ramtare. We will recite La hawla wa la quwwata illa billah. This reward will ask Allah to convey to Hazrat Mujaddad al-Afghani rahmatullah alayh. So every kalama verse is select and attached to a select Shaykh, specific Shaykh. Then their barakat, their blessings, and for you's descent. Plus, this is recitation of a Quranic verse. That's a separate reward, a separate enjoyment, and the effects are different. But right now, our niyyah intention is we are going to recite these verses for Ithal Thawab, so Allah rewards our pious elders. You understand what I'm saying? Then when we do muraqabah at the end, silent dhikr, this is the real dhikr of the Naqshbandi order, and all our asbaq, our lessons inside, the 35 lessons a person attains. 35 muqams, 35 levels to surpass and to go above. So tell me, there's Allah's name is the first lesson. Then imagine all the other lessons. You need determination and desire and passion and effort to learn the name of Allah. So after Khatam Khwaj Gan, reciting these verses, kalamat, which you'll repeat after me, then we will do the real proper dhikr in the heart, which you must learn in the company of the teacher. And then you progress in the levels. That's why we go to a teacher to learn muraqabah, silent dhikr. And this is not the method in any other silsila or teaching of dhikr or tasawwuf. So this is the last order that came to the world, Naqshbandi order, to teach the name of Allah. And this silsila order will go up to near to Qiyamah. Hazrat Mujaddad al-Afghani, they said that Mahdi alayhi salam, when he arrives to the world, at that time, the Shaykh of his time, the greatest Naqshbandi Shaykh, he will attach to him and learn from him. Subhanallah. Subhanallah. First, the Naqshbandi group will join with Mahdi al-Islam. This is written in Maktubat by Hazrat Mujaddad al-Thani. So this silsila will continue because his haqq is truth. Up to the time of Isa al-Islam, he's the Nabi, the Prophet of Allah is the Prophet. And so this silsila will continue to Hazrat Imam Mahdi al-Salam. And this silsila ends where? It goes back up the line, the chain to Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. That's where it started from. That's why it's unique and different. The other salasil, the orders of tasawwuf, they go and meet to Hazrat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh. This silsila goes back in the chain to Hazrat Abu Bakr Siddiq. That's why the hadith, the Rasulullah said that whatever was in my heart, O Siddiq, O Abu Bakr, I put into your heart. From this silsila, this order, whatever you attain is through the hearts, transfer of the affairs through the hearts. Clear? Understand the point?
So everything a student gets is from the company, the sohbah of a teacher. When the murid, in his heart, he gets the lessons and the blessings and the enhancement through the heart, to the heart of the student, and ongoing like that. Because this fairs the Prophet gave to Abu Bakr Siddiq. Anyhow, this is a small introduction I've given to you. After that, so we'll recite these great kalamat, great reward, great verses. After that, we'll do silent dhikr, muraqabah. And then obviously after that, to make our gathering accepted, we'll recite the Durood Sharif. Then we'll do dua. Okay? Okay, let's start. So be ready to recite these kalama, be attentive, be focused, pay attention. Every individual should repeat after me, okay? Don't be laid back, lazy. Read according to your emotions and beautifully and nicely. And recite thinking that I'm reciting, Allah's listening. Alhamdulillah, such beautiful verses. And that amazing result you'll get from that. So first we recite the Durood Sharif. Durood Sharif. Surah Fatiha. Alhamdulillah. Surah Fatiha. Alhamdulillah. Durood Sharif. सूर्य अलम नशर जिसको सूरत याद ना हो तो दुरूद शरीफ पढ़ता रहे. अलम नशर लक सदरक إنما النسي يسرا إنما النسي يسرا. سورة إخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. قل هو الله. Surah Fatiha.
درود شریف اللهم صل علی محمد. कलमात को वेद करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। दुरूद शरीफ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौल वला
إلا لا حول ولا قوة إلا بالله 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 درود الشريف يا باقي أنت الباقي 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 درود الشريف وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 یا حی یا قیوم برحمتک
أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك 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 أستغيث درود شریف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. درود الشريف pula. Allahumma salli ala Muhammad. لا إله إلا الله. Now we'll do muraqabah, silent dhikr. We'll do dhikr in the heart. And this dhikr is done in the heart, so it's called dhikr qalbi. So empty your heart of all thoughts and focus yourselves and pay attention towards your heart and keep your tongue still so that your tongue doesn't move. And in this dhikr there's a condition: the tongue shouldn't move, nor should there be any audible voice. Just focus silently towards your heart, and with your heart, with the tongue of your heart, with the beating of your heart, you're thinking that your heart is beating Allah, 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 Allah. That's all we've got to do. In other words, just empty your heart of thoughts. Even if thoughts come, avoid them. If the thoughts are going astray, don't worry. Just focus on your heart, pay attention to your heart, not with your tongue. With the tongue of your heart, not with the tongue of your voice. Just say Allah, 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 Allah silently. The tongue shouldn't move and there should be no voice, no noise. This is the start of muraqabah. So this is the dhikr of Allah, that Allah's mercies and sakina and peace and comfort descends. In the hadith it's stated that Allah Ta'ala's angels, they surround this gathering from all four sides. Allah's mercy envelops the gathering, and in the hearts, each person's heart, Allah's sakina, peace comes, and Allah is proud amongst His angels that look at this Jamaat, my people, how they sat silently and they're remembering me. So during the dhikr, in our Naqshbandi order, this is the tariqah that we recite some verses during muraqabah of the Shajra Mubarak's Shaykh will recite some verses. This is part of muraqabah, and this should not disturb your muraqabah. You keep on focused and remembering in Allah, and keep on listening to those verses and understand. So whatever ishara I read or verses I read, listen to them, but at the same time keep your focus on dhikr, and inshallah the blessings of those verses I recite will also come in the dhikr. This is the tariqah of our honorable elders. Sometimes they recite different verses, different statements. So also I will recite some verses, and you can listen to that as well. So we start dhikr now. Allah.
दरूद पढ़ते एक रोशनी जो पहुँच गई, दरूद पढ़ते एक रोशनी जो पहुँच गई, दरूद पढ़ते एक रोशनी जो पहुँच गई, दरूद पढ़ते एक रोशनी जो पहुँच गई। मुझे यकीन हुआ बात मेरी पहुँच गई, मुझे यकीन हुआ बात मेरी पहुँच गई। दरूद पढ़ते ही जो दरूद पढ़ते ही रोशनी जो पहुँच गई। मुझे यकीन हुआ, मुझे यकीन हुआ बात मेरी पहुँच गई, मुझे यकीन हुआ बात मेरी पहुँच गई। फरिश्ते देते हैं बड़ बड़ सलामी जो मुझको, फरिश्ते देते हैं बड़ बड़ सलामी जो मुझको। हजूर खुश हैं, जरूर खुश हैं, हजूर खुश हैं। फरिश्ते देते हैं बड़ बड़ सलामी जो मुझको। हजूर खुश हैं, जरूर खुश हैं, यहाँ तक जो बात पहुँच गई। जरूर खुश हैं यहाँ तक जो बात पहुँच गई। फरिश्ते देते हैं बड़ बड़ सलामी जो मुझको। हजूर खुश हैं यहाँ तक जो बात पहुँच गई। दरूद पढ़ते ही एक रोशनी जो पहुँच गई। ये सदकाल का हुस्नैन का है ज़हरा का, ये सदकाल का हुस्नैन का है ज़हरा का। हकीर तक भी फकीरी अगर जो पहुँच गई। हकीर तक भी फकीरी अगर जो पहुँच गई। दरूद पढ़ते ही रोशनी जो पहुँच गई। महक जो फैली है हर सू तो ऐसा लगता है। महक जो फैली
तो हर सू यूं लगता है सबा वहां से लिए उनकी खुशबू पहुंच गई। सबा लिए सबा वहां से लिए उनकी खुशबू पहुंच गई। दरूद पढ़ते ही रोशनी जो पहुंच गई। चमक रहे हैं जो शम्सो कमर तो लगता है। चमक रहे हैं जो शम्सो कमर तो लगता है। ज़ियाए रुख वजबी उन तलक भी पहुंच गई। ज़ियाए रुख वजबी उन तलक भी पहुंच गई। दरूद पढ़ते ही रोशनी जो पहुंच गई। मेरा शऊर मेरी रूह कह रही है मुझे। मेरा शऊर मेरी रूह कह रही है मुझे कि तेरी नात ये उनके हजूर पहुंच गई। ये तेरी नात ये उनके हजूर पहुंच गई। मेरा शऊर मेरी रूह कह रही है ये मुझे। मेरा शऊर मेरी रूह कह रही है मुझे कि तेरी नात ये उनके हजूर पहुंच गई। कि तेरी नात ये उनके हजूर पहुंच गई। ये फैज़ शेख है तुम पर करम हुआ सिफों। ये फैज़ शेख है तुम पर करम हुआ सिफों। कि सिफ्ते नात गोई तुम तलक भी पहुंच गई। कि सिफ्ते नात गोई तुम तलक भी पहुंच गई। दरूद पढ़ते ही रोशनी जो पहुंच गई। मुझे यकीन हुआ मेरा यकीन बढ़ा। मुझे यकीन हुआ बात मेरी पहुंच गई। बात मेरी पहुंच गई। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह कर बंदे अल्लाह 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 कर बंदे अपने रब से डर बंदे अल्लाह 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 कर बंदे अपने रब से डर बंदे मौत खड़ी है मौत खड़ी है सर पे तेरे मौत खड़ी है सर पे तेरे कब्र की रात से डर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे अपने रब से डर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे अपने रब से डर बंदे क्यों पता सुबह हो भी न हो क्यों पता क्या पता सुबह हो भी न हो कर ले इस वक्त ही कर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे अपने रब से डर बंदे अपने रब से डर बंदे अल्हम्दुलिल्लाह। Durood now, Durood Sharif.
in the court of the Prophet ﷺ, please recite Durood Sharif. Now Durood, sending Durood on the Prophet ﷺ is a unique ibadah, and for this Allah subhanahu wa ta'ala has selected some special angels who they wander around the earth, and they are the angels of Durood Sharif, and they look for those gatherings and assemblies where people are reciting Durood Sharif. And when they find those gatherings where Durood Sharif is recited, then all those angels, they gather that surround that gathering, they spread their angels, they take that Durood Sharif to the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when that person's Durood reaches to the court of the Prophet ﷺ, that this is the sunnah of the Prophet ﷺ, that whenever he was given a gift during his life, he would do dua for that person. So that Durood Sharif becomes so strong, we should believe that when we recite Durood, then immediately our Durood is sent to the Prophet and conveyed to the Prophet ﷺ. And in response to that, the Prophet ﷺ does dua for that individual. So with this thinking and this belief and understanding, Allah has given us an opportunity, and all of us should recite Durood Sharif together. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman daiman أبدا كثيرا كثيرا كثيرا
अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिगिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा सम्मितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान वहशरना यौमल क़यामति मअल ईमान अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इस्तक़बिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमुहब्बतिही वहशरना फी ज़ुमरतिही या करीम या क़ादियल हाजात इक़्ज़ हाजातना या क़ादियल हाजात इक़्ज़ हाजातना या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़ा बलय्यातना या शाफ़िअल अमराद इशफ़ा मुरादना या शाफ़िअल अमराद इशफ़ा मुरादना अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो लोग हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह सब पे हमें अजर सवाब अता फरमा। या अल्लाह जिस मुश्किलों से मुसीबतों से परेशानियों से सारी मुसीबतें हमें टाल दे, सारी परेशानी हमारी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो जो हम ख्वाहिशात लेके आए हैं इस मजलिस में हमारी ख्वाहिशों को पूरा फरमा मेरे मौला। दीन और दुनिया की तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, अमल में इजाफ़ा फरमा, इखलास में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, कुशादगी नसीब फरमा, आसूदगी नसीब फरमा। या अल्लाह बीमारियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह लड़ाई झगड़ों से हमें दूर फरमा। या अल्लाह इत्तेफाक नसीब फरमा, हमारे घरों में सुकून अता फरमा। या अल्लाह स्कूलों में हमारे घरों में सुकून नसीब फरमा, शांति नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ को कुशादा अता फरमा, हमारे कारोबारों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें सेहत, ईमान, सलामती नसीब फरमा, तमाम वो नेमतें अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे ख़जानों में है मेरे मौला, तमाम बुराइयों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनको तू बुरा पसंद बुरा करता समझता है, ऐ करीम तो अपने फज़ल करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह बिलख़ुसूस हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। ऐ मेरे मौला इस मस्जिद का हम पर बड़ा एहसान है, बड़ा करम है मेरे मौला। इस कमेटी का बहुत एहसान है जो हमें इजाज़त देती है, मस्जिद में बिठाती है, हमारे मेहमानों को मेरे मौला इकराम करती है, इज़्ज़त देती है। या करीम तो अपनी शान निशान इनको अज़र नसीब फरमा। पूरे कमेटी वालों के मेरे तमाम मुश्किलातों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह उनको आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी काम दीन के इस मस्जिद में हो रहे हैं या अल्लाह बुलंद तर बुलंद अता फरमा। हदीस से निस्बत से, या अल्लाह दाई निस्बत से, कुरान की निस्बत से, तफसीर की निस्बत से जो भी यहाँ पे हज़रात मेहनत करें इनकी ज़िंदगी में उनके अमल में बरकतें नसीब फरमा, उनके फैज़ को तमाम आलम में जारी फरमा। इस मस्जिद को हर रंग से दीन के हर सफ़र से मैंने मौला बुलंद फरमा दे। या करीम इस मस्जिद को तमाम दुनिया के अंदर बुलंद कर दे। हर तरफ से या उलमा पैदा फरमा, यहाँ पर हुफ़ाज़ पैदा फरमा, यहाँ पर दाई पैदा फरमा, यहाँ ज़ाकिरीन पैदा फरमा। ऐ मेरा मौला तो अपने फज़ल करम से अपने हबीब के सदक़े से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी हमारी परेशानी है इस मस्जिद के साथ से मेरे मौला इंतज़ामी परेशानी है या किसी और किस्म की परेशानी है, ए मेरे मौला सब परेशानी को आज की मस्जिद के सदक़े से दूर फरमा। ए मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमा, बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार नसीब फरमा। ए मेरे मौला जो कुछ भी ख्वाहिश इंसान लेकर है इनको ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है उनको फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह उनकी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह जो घर उजड़े हुए उनको मिला दे।
उनको आपस में मिला दे, इत्तेफाक पैदा फरमा दे, मोहब्बत के पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो जा चुके हैं उनको वापस ले आ। या अल्लाह तो अपने फजल करम से, अपने हबीब के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो जमात आई है मेरे मौला, इसको नबी पाक के रंग में रंग दे मेरे मौला। ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं इस पर तरक्की नसीब फरमा, इनको दिन रात तरक्की नसीब फरमा। और मेरा इनका हशर अबू बकर सिद्दीक़ के झंडे में फरमा, नक्शबंदी हशर फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमें भी अपना दाई बना ले और हमें भी दीन फैलाने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही व आलिही व सहबिही अजमाइन रहमतिक या रहमान।